So, yesterday I was discussing differential of a map from manifold M to manifold N. So, let me recall, okay, if f is a differentiable function from manifold M to manifold N, suppose their dimensions are M and N respectively. So, what we realized yesterday that for every point P in M, this induces a linear map. I will denote it by the symbol DFP. It is a linear map from TPM to TFPN. And the definition that emerged was this: if XP is a tangent vector on M, it will be mapped to a tangent vector in N, say DFP XP. So, this is a tangent vector at the point FP. All right, and we defined this tangent vector DFP XP as follows. So, DFP XP operating on a function G is given by XP operating on G composition F for all G belonging to C infinity N. You can put it Q, because these things are local. We are discussing these objects at a point P. So, let us consider G to be differentiable function in the neighborhood of Q. So, this is one of the definition. We are saying that this is linear, but we must check it out. So, this I left yesterday as an exercise to check that DFP is a linear map. DFP is a linear map. So, in order to show that DFP is linear, what we have to do? We have to consider the sum of two tangent vectors, operate DFP on them, and see whether it is equal to DFP XP plus DFP YP. This can be done easily. Similarly, one needs to verify that DFP operating on alpha time XP equal to alpha times DFP XP. These are easy verification. I leave it for the students to check. And geometrically also one can see it. Suppose M and N are these manifolds. F is a map from here to here. This is M, this is N. We had considered a tangent vector in M at a point P here, and this will be mapped to some tangent vector over here. Call it DFP XP. It is mapped at the point P, that is Q, and we had considered a real valued function on N, and we obtained a real valued function on M, that is G composition F. So, when XP operate on G composition F, it gives me the same value when DFP operates on G. In other words, this diagram is commutative. So, this definition in the box emerged by demanding that this diagram is commutative. But still we need to see how a tangent vector over here is mapped to a tangent vector over here in a linear manner. So, what I will do, this is the definition number 1. One can define this differential of f geometrically also. So, what I will be doing is the following. Suppose M is the manifold here, and I will draw a curve passing through the point P. Means I will consider a map gamma from an interval minus epsilon plus epsilon to here. Suppose this is gamma. So, the point 0, I can choose my interval in such a manner so that gamma 0 becomes P. Okay. You already have another manifold N, and there is a map F
from M to N. So once again I can compose these two maps, that is F composition gamma is a map from the interval minus epsilon plus epsilon into n. तो अगर कोई भी एक मैप आपको मिल रहा है किसी इंटरवल से किसी दूसरे स्पेस में, तो इंटरवल की जो इमेज होती है वो एक कर्व कहलाती है. सो एफ कंपोजिशन गामा इज ए कर्व इन एन, एंड दिस कर्व यू कैन नोटिस विल पास थ्रू एफ ऑफ पी. This curve will definitely pass through, you can call it Q also. Okay. So the tangent vector to the curve in a manifold is obtained by differentiating this map. So if you want to see that tangent vector to the curve gamma at a point P, what you have to do? You have to differentiate it at the point 0. Okay. You may call it xp. So xp is a tangent vector at the point P in M. So what I am doing is, so this is consider a curve in M. Consider a curve gamma in M, that is gamma is a map from minus epsilon plus epsilon into M such that the point 0 is mapped to gamma 0 at which is P. So this gives me a map F composition gamma, and F composition gamma becomes a map from this interval into N. If I consider gamma dash 0 as a tangent vector at P, call it xp, then you will see here that F composition gamma dash at 0 will be a tangent vector at the point Q. So this is a tangent vector. It is easy to realize. I need not prove anything. This is direct. This is a tangent vector at the point Q. Q means FP. ठीक है, ये जो टेंजेंट वेक्टर FP पे बन के आया वो ऑटोमेटिकली इमर्ज हुआ है. जस्ट बाय कंपोजिंग दीज टू मैप्स दिस टेंजेंट वेक्टर हैज इमर्ज्ड, और बड़े नेचुरल वे में आया है. इज इट राइट? आई विल कॉल दिस टेंजेंट वेक्टर YQ एज द इमेज ऑफ XP under certain map. That certain map is actually the differential of F. Okay, so this is the second definition of DFP. Let me rub off this part. So the second definition is XP we have assumed is gamma dash 0. So we define DFP XP equal to F composition gamma dash at 0. This is another way of defining differential of F. अब देखने में ऐसा लग रहा है कि ये definition 1 और definition 2 बिल्कुल अलग अलग सी हैं, but in fact what you will realize they are same. They are same, and the two definitions are in fact equivalent. This one can check. So definition 1 and 2 are equivalent. Definition number 1 and 2 are equivalent. This is my assertion. Okay, this is our assertion and it requires proof. So 0 we are choosing for the sake of convenience only. What? So this 0 we are choosing in the interval convenience. It is not important, but for the sake of convenience we are choosing otherwise. Alright, so I will start with any of these definition and will follow from it the second definition. So let me start with say DFP XP operating on G
equal to xp operating on G composition. The right side. For the second definition, I assume that xp is gamma dash 0. So this is gamma dash 0 operating on G composition F. And now let me recall the definition of gamma dash 0. मैंने गामा डैश 0 डिफाइन किया था. अगर गामा एक कोई कर्व है किसी मैनिफोल्ड m के ऊपर, ये कर्व है, ये गामा है, ये माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन इंटरवल है, 0 इज अ पॉइंट हियर. सो गामा डैश 0 वी डिफाइंड एज ए टेंजेंट वेक्टर एट द पॉइंट P. So gamma dash 0, if you remember, was defined as it is something which operates on function and gives you dy dt of G composition gamma. At the point t equal to 0. ठीक है, तो ये definition यहाँ पे लगाइए. So this must be, let me apply this definition over here. So this will be equal to dy dt of G composition F composition gamma at t equal to 0. This is by the definition of gamma dash 0. And now the composition of function is associative. So I can rewrite it as G composition F composition gamma evaluated at t equal to 0. Okay. Now look at this. F composition gamma is a new curve. F composition gamma is a map from interval to n. So this again, once again by definition, it is F composition gamma dash 0 operating on G also. Okay. And the left hand side is also dxp operating on G. So मैंने definition number 1 से शुरू किया और लास्ट में मुझे definition number 2 मिल गई. According to definition number 2, this is same as dfp-xp. So this is dfp-xp, this is equal to dfp-xp operating on G by definition 2. Similarly, you can start with the second definition and reach to definition number 1. Just go the other way around and you can get this definition number 1, and that shows the two definitions are equal. Okay, एक चीज़ को आप algebraically देख रहे थे, algebraic consideration से वो definition बनाई थी, and in the second place you have got it purely geometrically. So this is definition 2 is purely geometric. रिवर्स चले जाइए, आपको definition 1 मिल जाएगी. So this is what the differential of f is. All right. अब differential of f आप compute कर सकते हैं for known functions on a manifold. For known function, I can compute differential. So as an example, एक नॉन फंक्शन है, जैसे कि किसी इंटरवल i से या माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन रख लें, किसी मैनिफोल्ड इंटरवल से जो फंक्शन होता है वो कर्व देता है, तो उसको आप गामा कहिए. ओके, सो एक तरीका ये है कि आई विल लुक एट इट एज इफ इट्स ए मैप बिटवीन टू मैनिफोल्ड्स. वन मैनिफोल्ड इज ए वन डायमेंशनल manifold, other one is n dimensional or m dimensional manifold. इसका डिफरेंशियल इस सेंस में जैसे अभी हम बात कर रहे हैं वो क्या होगा. सो आई वांट टू फाइंड आउट डी गामा. ओके, सो ये भी वन डायमेंशनल मैनिफोल्ड है, ये कोई m डायमेंशनल मैनिफोल्ड है, एंड गामा इज ए मैप बिटवीन देम. सो लेट अस कंसीडर डी गामा. कंसीडर डी गामा.
और किसी भी पॉइंट पे आप ले लीजिए, टी पे ले लीजिए, डी गामा विल ऑपरेट ऑन नॉट ऑन टी, इट विल ऑपरेट ऑन the tangent vectors of the interval. Tangent vector of the interval will be something d by dt. Am I right? क्यों भाई क्या नाम आशकार? Why the tangent vectors of interval are d by dt? This is a one-dimensional manifold. So is parametric question RT DAT is a tangent vector? Yes, in fact, if you have a local coordinate system xi on a manifold around some neighborhood, then basic vectors are del upon del xi. अगर ये वन डायमेंशनल मैनीफोल्ड हो तो xi एक ना होके सिर्फ एक हो जाएगा, t हो जाएगा, और ये dy dt हो जाएगा. डेल की जगह चूँकि अब वेरिएबल एक ही है तो डेल ना लिख के d लिखें. So a typical tangent vector on one-dimensional manifold is d by dt. So this I have to consider. So by definition, it is just a tangent vector on M. So d gamma operating on d by dt, being a tangent vector on M, will operate on function on M. Okay. So मैं definition 1 लगा रहा हूँ. So by definition 1, algebraic definition, it will be what? df x operating on f, it is equal to xp operating on f composition this. So this is xp, xp means d by dt, g composition f, g की जगह f लिखा है और कैपिटल F की जगह F composition गामा. ठीक है ना? एंड दिस इज व्हाट, इसको याद है, एट सम पॉइंट t, व्हाट इज दिस, डू यू रिमेंबर? दिस इज गामा डैश t, दिस इज गामा डैश. अभी मैं बात कर रहा था गामा डैश 0 की यहीं पर. सो दिस इज गामा डैश t operating on f. Okay. So what do you realize from here? You realize from here that d gamma at d by dt, if you forget about f, is nothing but gamma dash t. Is it right? और आप अगर गौर करें तो हम डिफरेंशियल के लिए दोनों सिंबल यूज़ करते हैं, डैश भी लगाते हैं डेरिवेटिव लेते वक्त और डी भी यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि दोनों चीज़ें एक ही हैं. इफ़ यू आर रेस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ टू फंक्शंस फ्रॉम इंटरवल टू आर, देन डी एंड डैश आर सेम थिंग, एंड दैट इज़ व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग ऑल्सो, विच इज़ प्रिसाइजली दिस. तो यहाँ पे एक बात और वाज़ेह हो गई इस एग्जाम्पल से कि डी में और डैश में फ़र्क नहीं है अगर आप कर्व को डील कर रहे हैं तो, और बाकी जगह तो डैश लगाते ही नहीं हैं. जब वन वेरिएबल हो तभी डैश लगाते हैं. यहाँ पे we are dealing all in just generalized parameters, so it is not a concept of. हाँ नहीं, एस में भी वही बात आएगी. अच्छा सर, ऐसा भी सर वही है. पैरामीटर कोई भी हो, वन वेरिएबल हो, तो यही मामला है. Now एक और सिचुएशन है, let us consider it as an example number 2. This was 1. Suppose I have a manifold M and the other manifold is R, and suppose there is a function f, small f. Let me choose from M to R. रियल वैल्यूड फंक्शन को हम यूजुअली स्मॉल f स्मॉल g से डिनोट कर रहे हैं. Once again the same question, what is df, differential of f. So df over here, by definition 1, it will operate on a tangent vector of m. Let me call the tangent vector of m at a point p as xp. This will become a tangent vector in R. So this will belong to R.
and I just told you that tangent vector in R will be some d by dt. So say lambda times d by dt. So this implies that df xp must be equal to some lambda times d by dt, where t is a variable in R. ओके ठीक है. अब मेरे पास ये सोचिए कि एक टेंजेंट वेक्टर है एक्स पी, वो है सम xi I del upon del xi. My aim is to determine these xi i's, the coefficient. So xi i's, as you remember, are nothing but xp operating on the coordinate xi, coordinate functions xi. So this lambda, according to this definition, lambda from here, lambda must be equal to this tangent vector dfp, p भी लिख लीजिए चाहे तो, dfp xp ऑपरेटिंग ऑन कोऑर्डिनेट्स क्या है, r के ऊपर कोऑर्डिनेट्स है t. ओके, सो दिस इज इक्वल टू xp ऑपरेटिंग ऑन कोऑर्डिनेट फंक्शंस. जो हैं वो बेसिकली आपको याद हो, मैंने कोऑर्डिनेट फंक्शंस Rn के डिफाइन किए थे. दे आर इन फैक्ट प्रोजेक्शन मैप्स. इफ ui is a coordinate function on Rn, and what it does, it operates on an n tuple or give you the ith coordinate. अब अगर u मेरा कोई सिंगल वेरिएबल है तो वो ऑपरेट करेगा काय पे, किसी x पे, सिंगल वेरिएबल x पे. और व्हाट विल यू गिव यू, इट विल गिव यू द x. इट इज सिंपली एन आइडेंटिटी मैप. तो कोऑर्डिनेट फंक्शंस आर नथिंग बट identity function. So this t is a coordinate function. So you should keep in mind t is a coordinate function. Coordinate function. So this is what? xp operating on t composition f. अब आइडेंटिटी के साथ किसी फंक्शन को कंपोज करिए तो यू विल गेट द सेम फंक्शन f. सो दिस विल गिव यू xp ऑपरेटिंग ऑन f. सो दिस इज योर लैम्डा. सो व्हाट फॉलोज फ्रॉम हियर इज दैट dfp xp is equal to xpf into d by dt. वन डायमेंशनल स्पेस में, वेक्टर स्पेस में आपको बेसिस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. कभी आर में किसी वेक्टर को लिखते हैं तो बेसिस को छोड़ देते हैं, बिकॉज ऑल वेक्टर आर अलोंग द सेम लाइन. सो वी कैन फॉरगेट अबाउट इट, और एल्स वी कैन ऑल्सो राइट डाउन दिस dfp xp इक्वल टू xpf. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग. डिफरेंशियल ऑफ f इज सेम एज द xp ऑपरेटिंग ऑन f. ठीक, ओके, फॉर m2r रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए ये मामला है. सो वी विल मेक यूज ऑफ दीज रिलेशंस समवेयर इन आवर कंप्यूटेशन. सो वन नीड्स टू कीप इन माइंड ऑल दीज थिंग्स. हाँ, डिफरेंशियल ऑफ f इज ऑलवेज ए मैप from TPM to R. R manifold तो tangent space R का R ही होगा. yes. So that is why it is operating on XP. अगर मैं इस DFP आप लिख लें, FP लिख लीजिए. So DFP as usual will be a map from TPM to R. That is why DFP is operating on XP. अच्छा, आप देख रहे हैं ये बात जो हम कर रहे हैं वो टेंजेंट वेक्टर की हद तक हो रही है. डिफरेंशियल ऑफ f एट ए पॉइंट p की बात कर रहे हैं. तो एट ए पॉइंट पे तो रहने का कोई ख़ास फ़ायदा होता नहीं है, सिंस यू आर डीलिंग विद मैनिफोल्ड्स. सो वी मस्ट ट्राई टू ग्लोबलाइज द आइडिया. गिवन ए फंक्शन फ्रॉम m to n, विल इट पुश फॉरवर्ड द वेक्टर फील्ड्स ऑल्सो. ठीक है, अभी टेंजेंट वेक्टर पे df ऑपरेट कर रहा है, dfp, तो
तो क्या कोई डीएफ भी होगा जो वेक्टर फील्ड पे ऑपरेट करेगा, ये बात जहन में आती है. दैट इज़ व्हाट द ग्लोबलाइजेशन इज. सो व्हाट लेट मी repose my question like this, कि if x and y, whether the question is, now the question that I am raising is, the question is the question now is whether differential of f, differential of a map push forward the vector fields, push forward the vector fields also. This is the question that comes to our mind. So the situation is, it is not true all the time. If x and y are vector fields, so if x is a vector field, suppose situation is that you have two manifolds M and N, and there is a differentiable map from M to N. So if x is a vector field on M, that is x belonging to chi M, then क्या डी एफ एक्स की बात कर सकते हैं, ये सवाल है. सो इफ एक्स बिलोंग्स, देन इज देयर अ वाई इन chi n such that dfx equal to y. This is not true all the time. This is not true all the time. If it is true for some vector field, we call such vector to be f related. If for x, so definition is, if for x in chi m, there exists a y in chi n such that dfx equal to y, then we say that x is f related to y. This is the definition of f related to y. X is f related to y, and written as x is f related to y. ये सिंबल बनाते हैं. अगर मैनिफोल्ड M पे कोई x है और इत्तेफाक से आपको यहाँ एक y मिल जाए, सच दैट अगर df(x) निकालें, यानी कि dfp xp इक्वल टू वाई क्यू फॉर ऑल p, ये लिखने का मतलब फॉर ऑल p है, देन आई विल से दैट x एंड y आर f रिलेटेड. ओके, और y इज x इज f रिलेटेड टू y. ओके सर, टेंजेंट केस में मैनिफोल्ड के हर एक टेंजेंट स्पेस पे डिफरेंशियल होगा, अगर होगा तो टीबीएम जो भी है. नहीं, फंक्शन पहले से डिफरेंशिएबल मान के चल रहे हैं और उसका डिफरेंशियल कंप्यूट कर रहे हैं. फंक्शन पहले से डिफरेंशिएबल मान के चल रहा है. डिफरेंशियल मान के मतलब क्या मान रहे हैं कि मैनिफोल्ड के हर टेंजेंट वेक्टर पर डिफरेंशिएबल, ये मान के चल रहे हैं कि जो यूजुअल डेफिनेशन है डिफरेंशिएबिलिटी की, वो होल्ड हो रही है हर पॉइंट पे. ठीक है, तो हर पॉइंट पे अगर होल्ड हो रही है तो वो डीएफपी एक्सपी एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, वो ऐसे निकालें.
सर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन एम एफ, तो हर एम के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो हर पॉइंट के लिए फिर टीपी में एग्जिस्ट करेगा। हाँ बिल्कुल, और क्या, टेंजेंट स्पेस तो हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। अगर आपके जैसे कर्व का मामला है तो ऐसे डीएफपी में तो बहुत सारी एग्जिस्ट करेंगी, डीएफपी एक नहीं, हर बहुत सी एग्जिस्ट करेगी, एग्जिस्ट करेंगी। बिल्कुल, और क्या, ये तो आर्बिट्रेरी पॉइंट है ना, आर्बिट्रेरी पॉइंट है। लेकिन वेक्टर फील्ड के लिए ऐसा नहीं हो रहा सर, इसलिए इसको हमने रखा। हाँ, तो वेक्टर फील्ड में ऐसा पॉसिबल है कि एक वेक्टर फील्ड मे बी एफिलिएटेड टू y बट नॉट एफिलिएटेड टू z। हाँ हमेशा वाई नहीं मिलेगा, वेक्टर फील्ड इज द जनरलाइजेशन ऑफ टेंजेंट वेक्टर, ऐसा नहीं है। नहीं, ग्लोबलाइजेशन, नॉट जनरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ओके तो इसी बात को मैं दोबारा से लिख देता हूँ, दैट इज डी एफ पी एक्स पी इक्वल टू वाई एट क्यू, क्यू मीन्स एफ पी, क्यू इक्वल टू एफ पी फॉर ऑल पी इन एम। अगर ऐसा हो कि हर पॉइंट पे मुझे ये y मिलता रहे, वाई क्यू मिलता रहे, तो हम कहेंगे पूरा वेक्टर फील्ड x जो है वो वेक्टर फील्ड y से f रिलेटेड। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ differential of f globally. Okay, so now we must have some characterization when the two vector fields are f related. So there is a lemma, let me call it. It's not a very strong result, but so let x belongs to chi n, or a vector field x belonging to chi m is f related to a vector field y in chi m if and only if the following relation holds: df x operating on G is equal to yg composition f. इसको गौर से देख लीजिए कि what does this relation means. Or you can also say, or I can say x operating on G composition, यही बेटर है, आप df का वर्ड अभी यूज़ मत कीजिए, वो मैं ऊपर कर चुका हूँ, इसको ऐसे कर लीजिए, x operating on G composition f is equal to yg composition f. बात समझ में आई? The left hand side is a function on m, and what is this? This should also be a function on m. Y is a vector field on n. G is a real valued function on n. So yg will become a function on n. When you will compose it with f, it will become a function on m. तो जो डेफिनेशन, जो भी आप इक्वेशन लिखते हैं उसको चेक कर लेते हैं कि ये मेक सेंस कर रही है या नहीं कर रही है। अब मैं लेफ़्ट में तो एक फंक्शन ऑन m लिख दूं, राइट में एक फंक्शन ऑन n लिख दूं और इक्वल का निशान लगा दूं, तो दैट विल नॉट मेक सेंस, वो मीनिंगलेस चीज़ हो जाएगी। ओके, सो आप को ज्योमेट्रिकली भी देखते रहना पड़ेगा कि वट एवर वी आर राइटिंग मेक सेंस। तो ये m है, ये n है, यहाँ कोई वेक्टर फील्ड x है, वेक्टर ऐसे दिखते नहीं जैसे मैं बना रहा हूँ,
ये तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोई वेक्टर फील्ड y होगा और f इनके बीच में कोई मैप है, g कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है लाइक दिस। सो अगर ये y है तो yg विल बी ए फंक्शन ऑन n, ओके, दैट फंक्शन इज फ्रॉम हेयर टू हेयर, आई विल कंपोज इट विद f. So yg is a function on n and compose it with f, you will get a function on n. Is it right? So this is the characterization. अगर आपको देखना है कि यहाँ की ये वेक्टर फील्ड वहाँ की किसी दूसरी वेक्टर फील्ड के साथ f रिलेटेड है, so you must check this. Okay? दोनों के सेम रियल नंबर का आना ही काफ़ी नहीं है, सेम रियल नंबर आना चाहिए। यहाँ पे अगर ये मैप कर रहा है लैम्डा पे, तो ये भी यहाँ पे लैम्डा पे आना चाहिए। So this is what we are saying. All right, let me prove this lemma. Okay, so let me start with this is the relation star कहिए इसको. So what star tells you is star implies कि x operating on G composition F is equal to yg composition F. ठीक है, ये दोनों फंक्शन बराबर है, so their values at each point must be same. So this implies, ये जो मैं रिलेशन लिख रहा हूँ ये दोनों तरफ ट्रू, so ये सब इक्वलेंट. So left hand side will be x of G composition F at a point P. P will be yg composition F at a point P for all P in M. P belongs to M. P in M, for all P in M. So the left hand side will be what? एक ऐसी सूरत हाल है कि x किसी फंक्शन पे ऑपरेट कर रहा है और फिर आपको इसकी वैल्यू एट p देखनी है, तो आपने देखा है कि ये बराबर होता है xp f के. So this must be equal to xp of G composition f. And the right side you have composition of two functions. So this I will write it like this, yg operating on fp. कंपोजिशन का यही मतलब होता है, दो फंक्शन. ओके, yg composition fp. So what does it means? So this is xp, yg yq, or you can say it is yg operating on q. So what is this? This means, so अब ये मेरे पास एक वेक्टर फील्ड है जिसने किसी फंक्शन g पे ऑपरेट किया है और इसको मैं किसी पॉइंट p पे निकाल रहा हूँ. तो इसकी वैल्यू भी हम जानते हैं, दिस इज yp ऑफ g, और ये q पे निकाल रहे हैं तो दिस इज yq ऑफ yq, हाँ yq. Or I will rather write down y of fp operating on g. So xp operating on G composition f, it is equal to yfp operating on. So this is dfp. This is, we know that this is dfp xp operating on equal to y fq operating on. जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, दिस इज ट्रू फॉर ऑल fp, f of p. सो ये भी साथ ही में चल रहा है फॉर ऑल p, फॉर ऑल p इन m, ये चल रहा है बराबर. ओके, सो व्हाट डू यू गेट?
कि y there exists a vector field, y becomes a vector field whose value at every point is same as dfp xp. So this implies कि dfp xp equal to yp yf yq for all p in M. That means ये yq की जो yq के करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर फील्ड है, हर पॉइंट पे वो इट बिकम्स एन इमेज ऑफ xp at under differential of f. Every tangent vector by map moves from another manifold. Yes, moves to another manifold. So this proves the lemma. अच्छा, जो इम्पोर्टेंट बात है, अब जो बात जहन में आती है कि ये जो डिफरेंशियल ऑफ एफ है, ये मान लीजिए वेक्टर फील्ड को किसी न किसी वेक्टर फील्ड पे ले जा रहा है, तो ली ब्रैकेट का क्या होगा? सो द आंसर इज इफ द टू वेक्टर फील्ड ऑन एम आर एफ रिलेटेड टू टू वेक्टर फील्ड्स ऑन एन, देन द ली ब्रैकेट विल ऑल्सो बी एफ रिलेटेड. सो दिस इज अनदर रीजन. काय में जो ये DFP डिफरेंशियल जो हमने कहा कि इट इज अ लीनियर DFP मैप, डिफरेंशियल मैप इज अ लीनियर मैप. हाँ हाँ, सो स्टार्टिंग में आता है x प्लस y. सो लाइब्निज रूल का ताल्लुक प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से है. जब आप प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन पे ऑपरेट करेंगे तब लाइब्निज का नाम आएगा. ये हम सर ऑपरेट कर रहे हैं इस पे वेक्टर टेंजेंट वेक्टर पे, तो यहाँ प्रोडक्ट का सवाल नहीं. ओके, सो DFP XP over tangent is DFP XP tangent vector. So this also satisfy linearity and Leibniz property. लाइब्निज प्रॉपर्टी क्या होगी, लिख देंगे आप? डीएफपी की लाइब्निज प्रॉपर्टी क्या होगी? मैंने जैसे अभी बताया आपको कि लाइब्निज प्रॉपर्टी का नाम जब भी लेंगे आप कि जब वो मैप किसी प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन पे ऑपरेट कर सके. टेंजेंट वेक्टरों की प्रोडक्ट कहाँ होती है? नहीं होती ना, तो लाइब्निज का भी जिक्र नहीं आएगा. डिफरेंशियल ऑफ एफ इज ए मैप फ्रॉम ए लीनियर स्पेस टू ए लीनियर स्पेस, और उस लीनियर स्पेस में प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नॉट अवेलेबल. सो वी कैनॉट टॉक ऑफ लाइब्निज रूल. यस, सही बात है. Yeah, so one has to keep in mind. So lemma 2 is the following. Lemma 2 says that if x1 is some vector field is related to y1, f related to y1. So this should be kept in mind. X's are vector field on M, Y's are vector field in N. Okay. And F is a map from M to N. This is in our mind. If x1 is f related to y1, x2 is f related to y2, then this lemma says that the Lie product of x1 and x2 will be f related to y1 y2. This is what it is. ठीक है ना? So proof, let us see. So हम क्या करेंगे? In order to prove the result, what I have to show is कि x1 x2. So in order to prove this theorem, lemma 2, ये lemma 1 है. Yes, we will use this. Yes, yes. So to prove the lemma, we need to show
that x1 x2 operating on G composition F is equal to y1 y2 operating on G and composition F. इसको चाहे तो आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिए ताकि ये लगे कि वो कंपोजिशन इस फंक्शन के बाद है. ऑलराइट, सो लेट मी स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, so this will be x1 operating on x2 which is operating on G composition F minus x2 operating on x1 which is operating on G composition F. So let us see x1 x2 operating on G composition F. We further know that x2 is F related to y2. Make use of this information over here. So according to lemma 1, it must be same as y2G composition F by lemma 1. Same thing over here, x2 x1 means y1G composition F. Okay. So now this is a function, this is also a function on n. I will call this function as g1 or g2. So write or put y2g equal to something g2, real valued function on n, and y1g you put as g1. ओके तो ये आपका जो रिलेशन है ये बन जाएगा x1 ऑपरेटिंग ऑन g2 कंपोजिशन f माइनस x2 ऑपरेटिंग ऑन g1 कंपोजिशन f. x1 is f related to y1, so this will become so the last term, so this becomes equal to y1 g2 composition f and the second term will be y2 g1 g2 है ये और ये g1 है, g1 composition f, or I can also write y1 g2 minus y2 g1. कंपोजिशन को बाहर कर लीजिए क्योंकि कंपोजिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव. ओके, सो y1 g2 की वैल्यू रख दीजिए, इट इज़ y2g, दिस इज y2g माइनस y2, g1 इज y1g और कंपोजिशन f. सो दिस इज this bracket is y1 or y2 operating on G composition F. Look, have you got the right side? Very much. So this proves lemma 2 also. This proves lemma 2. Okay. If x and y are f related, so if x and y are f related, then we write dfx equal to y. ये हमेशा आएगा नहीं, x के लिए आपको y मिल जाए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर मिल गया तो ये सूरत है. With this understanding in mind, the last lemma will be written as df of x1 x2 is equal to df of x1 and df of x2.
अगर इस लैंग्वेज में बात करी जाए, सो द लास्ट लेमा प्रिसाइजली सेज दिस, ओके, सो df प्रिजर्व्स द ली ब्रैकेट्स। तो उससे हम y1 y2 लिख सकते हैं। उसको y1 y2 वो पहले लिखा था, नाम उसका x1 x2 हो गया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द टेंसर्स, ओके। नहीं, टेंसर से पहले भी कुछ चीज़ें हैं which I will be doing in my next lecture. I mean the dual of tangent space, and the elements of the dual space are one forms. So this we will discuss in our next lecture.